evolution of medical surgical nursing. In ancient time, when medical law were associated with good or evil spirit, the sick were usually cared for in temples and houses of worship. These women had no real training by today's standard, but experience taught them valuable skills, especially in use of herbs and drugs, and some gained fame as the physician of their era. एंशियंट टाइम में जो मेडिकल लॉयर थे वो उन्होंने उस टाइम पे क्या होता था कि ऐसे एक स्पेशलिटी नहीं थी, राइट, कि कोई डॉक्टर और कोई नर्स ऐसा नहीं था उस टाइम पे, और नहीं तो कोई हॉस्पिटल्स थे। तो उस टाइम पे क्या होता था, जो टेम्पल्स थे या फिर जहाँ पूजा करते थे वहाँ पे क्या करते थे, लोगों की केयर की जाती थी, उनकी देखभाल की जाती थी, उनको ट्रीट किया जाता था। बहुत सारे ड्रग्स होती थी जो वो उस टाइम पे जो वुमेन्स होती थी उनके पास कोई ऐसा रियल ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस था उन्होंने वो बहुत ही वैल्यूएबल स्किल थी उनके पास कि उनको पता था कि कौन सी ड्रग्स किस ड्रग्स का क्या यूज़ है, किस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उनको ड्रग्स का हर्ब्स का बहुत नॉलेज था। तो उस टाइम पे वो लोगों की केयर ऐसे ही किया करते थे। उस टाइम पे कोई स्पेशलिटी नहीं थी कि यू आर द डॉक्टर एंड यू आर द नर्स, नो स्पेशलिटी। नेक्स्ट वन इज इन 17th century S.T. Vincent de Paul began to encourage women to undertake some form of training for the work. जो S.T. Vincent de Paul थे उन्होंने वुमेन्स को इंकरेज किया कि आप ट्रेनिंग लेना शुरू करो अपने काम के लिए। पर उस टाइम पे कोई रियल हॉस्पिटल ट्रेनिंग स्कूल नहीं था नर्सेज के लिए, जब तक एक कैसर वर्थ जो कि जर्मनी में स्टैब्लिश नहीं हुआ था तब तक, ठीक है। तब तक उनके पास कोई रियल हॉस्पिटल ट्रेनिंग नर्स नहीं था हॉस्पिटल, ठीक है। उसके बाद इन 1946 में कैसर वर्थ स्टैब्लिश हुआ था जो कि कहाँ पे, जर्मनी में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो था उन्होंने रिसीव की थी ट्रेनिंग रेड लेबर। जब उन्होंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली थी उन्होंने एक सेंट थॉमस हॉस्पिटल जो कि लंदन में है उसको स्टैब्लिश किया था। द फर्स्ट स्कूल डिजाइन प्राइमरी टू ट्रेन नर्सेज रेदर देन टू प्रोवाइड नर्सिंग सर्विस फॉर द हॉस्पिटल। पहला स्कूल डिजाइन हुआ था नर्सों को ट्रेन करने के लिए रेदर देन टू प्रोवाइड नर्सिंग सर्विस फॉर द हॉस्पिटल, ओके। In the United States, nursing modernized rapidly during the late 19th and 20th century. The number of hospitals nationwide grew from only 149 in 1873 to 4,400 in 1910. With this growth, new position for nurses developed and nursing gained respectable social status. यूनाइटेड स्टेट में क्या था कि जो नर्सिंग मॉडर्नाइज जो नर्सिंग बहुत ही रैपिडली मॉडर्नाइज हो रहा था, लाइक बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहे थे। नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स रैपिडली ग्रो कर रहे थे, 149 से 4,400 हो गए थे, ठीक है। इतनी स्पीड ग्रोथ को देखकर न्यू पोजीशन फॉर नर्सेस डेवलप, नई नर्सों के लिए नई पोजीशन डेवलप हुई, डेट इज नर्सिंग गेन। और नर्सिंग ने क्या किया, एक सोशल स्टेटस गेन किया, और दिस इज द सेंट थॉमस हॉस्पिटल। And then nursing subsequently became one of the most important profession open to women until the social changes brought by revival of the feminist movement that began in 1960, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन वुमेन्स के लिए था उस टाइम पे। During the late 19th and early century in the United States, adult patients in many of the larger hospitals were typically assigned to separate medical, surgical and obstetrical wards. Nursing education and hospital training school reflect these divisions to prepare nurses for work on these units. लेट 19 और अर्ली 20 सेंचुरी में यूनाइटेड स्टेट में जो अडल्ट पेशेंट थे बहुत ही बड़े बड़े हॉस्पिटल में, ठीक है। वहाँ पे क्या था, उन्होंने क्या किया, उस जो हॉस्पिटल्स थे उन्होंने क्या किया, मेडिकल सर्जिकल ऑब्स्टेट्रिक वार्ड को सेपरेट कर दिया था। क्यों? क्योंकि अडल्ट पेशेंट जो थे वो बहुत ही ज़्यादा थे उस टाइम पे, ठीक है। तो नर्सिंग एजुकेशन जो हॉस्पिटल ट्रेनिंग स्कूल्स था उन्होंने क्या किया, नर्सों में भी डिवीजन लाए कि दीज नर्सेज फॉर मेडिकल एंड दीज नर्सेज फॉर सर्जिकल, लाइक नर्सेज की भी यूनिट सेपरेट हो गई थी, राइट। Early National League of Nursing Education, that is NLNE, curriculum guides treated medical nursing, surgical nursing and disease prevention. जो NLNE था उन्होंने क्या किया, मेडिकल, सर्जिकल और डिजीज प्रिवेंशन एज अ सेपरेट टॉपिक्स उन्होंने ट्रीट किया, ठीक है। अब डिजीज प्रिवेंशन में क्या होता है, इनकॉर्पोरेटिंग पर्सनल हाइजीन एंड पब्लिक सैनिटेशन। By 1930, however, advocates recommended that medical and surgical nursing to be taught in a single interdisciplinary course because the division of the two was considered an artificial distinction. Surgical nursing came to seen as a care of medical patient who were being treated surgically. अब 1930 में इनका कहना था कि मेडिकल और सर्जिकल नर्सिंग दोनों को एज ए सिंगल पढ़ाना चाहिए, राइट, दोनों को सेपरेट नहीं करना चाहिए। बिकॉज जो सर्जिकल नर्सिंग है वो कब आती है, जब मेडिकल पेशेंट जो सर्जिकली ट्रीटेड होते हैं उनकी केयर तब दी जाती है, ठीक है। द NLNE गाइड्स की कंबाइंड कोर्स होना चाहिए, दैट इज मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग।
तभी हमारा फिर तब से फिर हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एज अ कंबाइंड हमें पढ़ाया जाता है. स्टूडेंट्स वर एक्सपेक्टेड टू लर्न नॉट ओनली द थ्योरी एंड ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल physiological condition but also to provide total care of the patient by understanding the role of health promotion and the psychological, social and physical aspects that affect a patient's health. Students को केवल थ्योरी और ट्रीटमेंट कैसे होता है एबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन का उसको ही नहीं पढ़ाना चाहिए, बल्कि उन्हें ये भी बताना चाहिए कि हाउ टू प्रोवाइड टोटल केयर ऑफ द पेशेंट की क्या रोल है हेल्थ प्रमोशन का, उसे अंडरस्टैंड करना चाहिए. साइकोलॉजिकल, सोशल एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स भी देखने चाहिए. 1960 में जो नर्सिंग स्कूल एम्फसाइज द इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग. 60s and 70s स्टैंडर्ड वर डेवलप फॉर मैनी नर्सिंग स्पेशलिटी इंक्लूडिंग मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग. अब 1960 और 70 तक क्या हो गया था, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एज अ कंबाइंड कोर्स पढ़ाना स्टार्ट हो गया था. Standard, that is medical surgical nursing practice, written by Community of Division of Medical Surgical Nursing of American Nurses Association, was published in 1974. It focused on collection of data, development of nursing, diagnosis and goal for nursing and development, implementation and evaluation of plan care. After that, statement on the scope of medical surgical nursing practice followed in 1980. इसमें जो एरिया था उसका पूरा फोकस क्या था कि कलेक्शन ऑफ डाटा पे, डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग, डायग्नोसिस, गोल्स क्या है नर्सिंग के, और इम्प्लीमेंटेशन और क्या एवोल्यूशन ऑफ प्लेन केयर था. ठीक है. 1991 में जो अकेडमी है मेडिकल सर्जिकल नर्सेज, दैट इज AMSN, उसने क्या किया, प्रोवाइड किया इंडिपेंडेंट स्पेशलिटी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए, मेडिकल सर्जिकल और एडल्ट हेल्थ नर्सेज के लिए. 1996 में AMSN ने पब्लिश किया इट्स ऑन स्कोप एंड स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग प्रैक्टिस कि क्या स्टैंडर्ड और स्कोप है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग प्रैक्टिस का. ठीक है. 1996 में पब्लिश किया था AMSN ने. उसके बाद सेकंड एडिशन 2000 में आया था, जिसमें ANA और AMSN दोनों ने बोला था कि केवल क्लिनिकल नर्सेज स्पेशलिस्ट ही वर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च. ठीक है. जितने भी मेडिकल सर्जिकल नर्सेज हैं मस्ट इनकॉर्पोरेट रिसर्च फाइंडिंग इन देयर प्रैक्टिस. After that, the trends in medical surgical nursing. Now, recent trends have affected medical surgical nurses, including the increasing use of nursing case management, expansion of advanced practice nursing, total quality improvement, development of clinical pathway, changes in professional practice model, healthcare reform. The trend toward increased equity of patient began in 1980s has become a fact of life. Then influence on future nursing practice, expanding knowledge and technology, healthy people initiative, evidence-based practice, healthcare informatives, nursing informatives and standardized nursing terminologies. Then registered nurse licensure, addiction nurse, ambulatory care nurse, peri-anesthesia nurse, cardiac or vascular nurse, critical care nurse, emergency nurse, flight nurse, dialysis nurse, first assistant nurse, holistic nurse, home health nurse and school nurse. Then after that, the master's or higher degree in nursing is as a nurse practitioner there is acute care, adult care, family care, gerontological care, palliative care and pediatric nurse practitioner, right? After that, clinical specialists are adult psychiatric and mental health nursing, community health nursing, medical surgical nursing, palliative nursing, pediatric nursing, advanced nursing administration, advanced oncological clinical specialist, clinical nurse leader. Then social trends influencing the development of nursing. Ancient civilization, care of sick was related to physical maintenance and comfort, first by family member, relative, servant or prisoners, eventually by religious order or humanitarian societies. Then mental health is Linda Richards and Rodriguez takes work to improve the care of mentally ill. Then modern civilization focus is on technology. After that, religious tradition or Catholic, Protestant. First one is courage, a care of sick in battlefields, military or naval hospitals and prisons, care of sick and dying during epidemic like cholera, typhus, smallpox. Next is sacrifice, creativity, compassion. Right, these are the social trends that influences the development of nursing. Then, in case of women's movement, first is nursing has been a premier political force for women's rights. Nurses organized the first major professional organization for women, edited and published
the first professional magazine by women, that is Sarah Josepha Halley. She is the first editor जिसने क्या किया था, मैगजीन पब्लिश की थी, ठीक है. एंड आफ्टर दैट मार्गरेट सैंगर वाज अ पब्लिक हेल्थ नर्स इन न्यूयॉर्क. एंड इन्होंने पहला बर्थ कंट्रोल क्लिनिक यूएस में ओपन किया था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती थी, राइट. लविना डॉक एक राइटर और पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं. अर्ली फेमिनिस्ट डिवोटेड टू वुमेन सफरेज, participated in protest and demonstration until passage of 19th Amendment in 1920. Women right to vote. She fight for that women have right to vote, right. Then in case of cultural factors, first major professional group to integrate black and white members, right. There was so many things like black and white members, kind of. So after that, in case of war, Nightingale in Crimean War, mortality rate dropped from 60% to 2% as a result of environmental changes she implemented, right. Clara Barton organized nurse to provide care in American Civil War. Clara Barton ने ऑर्गेनाइज किया था कि अमेरिकन सिविल वॉर में वो नर्सेस केयर प्रोवाइड कर सकें, राइट. अमेरिकन रेड क्रॉस जो कि क्या सर्व करता है, वॉर एंड पीस टाइम को. अमेरिकन रेड क्रॉस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटिंग वुमेन फॉर आर्मी नर्स कॉर्प ड्यूरिंग WWI. Then their motto was American nurses for American men. Now, in case of economic factor, insurance like fee for service and managed care, right? Cost of healthcare rising faster than inflation. And in case of educational factor, Doc with Isabel Hampton Robb and Mary Nutting founded American Society of Superintendents of Training Schools for Nurses of US and Canada. This organization was very politically active and became the National League for Nursing, and which promote quality nursing education to this day. Then for the political aspects, Nightingale was the political influencer, everyone knows. Clara Barton, who persuaded Congress in 1882 to ratify the Treaty of Geneva so the Red Cross could perform in peacetime. Okay. Nightingale was the first nurse to expel political pressure on government, reforming hospital and implementing health education, right. So these are the social trends that influences the development of nursing, and these are more with more examples like with the political aspect. Lillian Ward's political pressure lead to creation of US Children Bureau, right. And in 1960, nurses become involved in political, local, state, national level. Examples are Eddie Bernick Johnson. Ada Sue Hinshaw directed the NIH Center for Nursing Research, and nurses in all practice areas are affected by public policy on a daily basis. This demand that all nurses be proactive in policy development. Now, Nursing Agenda for Healthcare Reform developed in 1991. Nurses can use this agenda to unite and become a political force in healthcare delivery. Now, some more social trends that influences the development of nursing are a group of practitioners who band together to perform social or political function because they could not do alone. Define and regulate the profession. Okay, define and regulate the profession. Development of knowledge base for practice, research. Transmit norms, values, knowledge and skills. Communicate, advocate, contribution of the profession. Address members' social and general welfare needs. Thank you. Thank you for listening.